Hello friends, welcome to part 2 of why R2I fails and the mistakes you should avoid to make this transition a successful one. अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है देन आई रिकमेंड आप पहले वो वीडियो जरूर देखें, लिंक इज ऑन द टॉप. फ्रेंड्स, R2I एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट डिसीजन है. डिफिकल्ट इसलिए बिकॉज देयर आर सो मेनी मूविंग पार्ट्स टू बैलेंस, बट इफ यू आस्क मी इट ऑल कम्स डाउन टू मैनेजिंग फाइनेंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस. और आज के इस वीडियो में हम इसी गैप को डिटेल में समझेंगे. सो लेट्स डाइव इन. Have you heard of RNOR status and its benefits to NRIs returning to India? RNOR is resident but not ordinarily resident. Friends, RNOR is a status given by the Indian government to NRIs returning to India for their financial and taxation purposes. ये एक 3 साल का बफर पीरियड है during which you are not fully Indian but not fully NRI as well for taxation purposes. So even though you have moved to India, RNOR की वजह से you can get the full benefit of DTAA, which is Double Tax Avoidance Agreement between India and different countries across the world. So during your RNOR status, you will not be double taxed on interests earned in foreign banks, capital gain tax when you sell your stocks or other assets, and withdrawals from foreign bank accounts like your 401k or the IRA. Many a times NRIs are not aware of this and shock तब लगता है जब when you transfer the money you earned abroad to India because of its tax implications. So अगर आप अपने foreign investment sell करना चाहते हैं या retirement planning के लिए 401k transfer करना चाहते हैं, then it is advisable that you do it around the RNOR window. Consider RNOR as the safety net while you are moving back to India. I am going to make detailed series of videos on each and every financial aspect of coming back to India in the next coming weeks. So do subscribe and press the bell icon. Friends, मैं ये बहुत closely मानता हूँ that R2I success depends on setting the right expectations. So my second point to avoid R2I failure is to keep it real and do not fall for the hype. आप सबने सुना ही होगा that India is a land of startups. Yeah, next 30 years are of India. But is it all true? Friends, I am a firm believer of the fact that the future belongs to India. But ये भी fact है only 1 out of 10 startups succeed compared to almost 33% globally. India में successful business करना is really tough. So when I hear NRIs say that हम India जाके startup करेंगे and will hopefully make millions, I don't think it's a realistic expectation anymore. True, India is a vibrant startup economy, but especially when you link it with R2I, I'd say do not base this critical decision of your life just on the success of your startup. A better option would be to come back with a regular job if you are in one, or even if you want to join a startup, then do a salary based agreement rather than just equity based to minimize the risk. और ये इसलिए भी important है कि भगवान ना करे आपका स्टार्टअप नहीं चला, then आपको ये दुख नहीं होना चाहिए कि इंडिया आके आपने कोई गलती की. So keep your expectations real. और इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट रीजन भी है, that is the hype of high salaries in India. फ्रेंड्स, हम सभी ने इंडियन कंपनीज में स्पेशली आफ्टर कोविड ऑफर्ड हाई पैकेजेस के बारे में सुना ही है, एंड ये ट्रू भी है. For example, today many of my friends with 15-20 years of work experience are drawing packages more than 1 crore rupees working for MNCs. But the fact of 1 crore package is that after tax deductions, the take home money is close to 3 to 4 lakh rupees per month, because the rest is built up within ESOPs with a vesting period of at least 3 to 4 years. आपको लग सकता है दैट इंडिया जाके आप 1 करोड़ के पैकेज में क्या नहीं कर सकते, बट विद अ मंथली टेक होम ऑफ 3 to 4 lakh rupees, living in metros, the best you could do is send your kids to international schools and live in a premium housing society. So the point is that plan R2I with the right set of expectations. Friend, the last 2 points in the
reasons why R2I fail are most important, and I can tell you with experience that they are always ignored. NRIs means money, and पैसे से तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं. एक जनरल सोच यही है. जब हम इंडिया से बाहर जाते हैं, then 90% of the times हमारा गोल होता है अच्छा पैसा कमाना. और सच है, वर्किंग इन अ फॉरेन लैंड फॉर 5-10 years हम एक अच्छी वेल्थ बना भी लेते हैं. And while planning R2I, at the back of our minds, the thought is that we have enough money, and with money we can buy everything and live happily. But friends, this thought is far from the truth and will be the top unsaid reason why return to India might feel as the wrong decision for many NRIs. पैसे से आप ट्रैफिक से नहीं बच सकते. पैसे से आप क्लीन एयर नहीं खरीद सकते या प्योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खरीद सकते. या पैसे से आप लोगों की जनरल पोलाइटनेस इंप्रूव नहीं कर सकते. और इसमें इंडिया की कोई गलती नहीं है. मेरा मानना है रिटर्न टू इंडिया तभी सक्सेसफुल होगा जब आप इंडिया को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ देखेंगे और जिएंगे. हमको पता है इन चैलेंजेस के बारे में, लेकिन यह भी तो पता है दैट more than 140 crore people are happily living with the challenges India is throwing at them. तो हम कुछ R2I families उन सब से अलग तो नहीं है. We have to build our lives according to the way India is. सब खेल माइंडसेट का है. इंडिया में इतना कुछ पॉजिटिव है. फॉर एग्जाम्पल, फ्रीडम टू डू वॉट यू वॉन्ट इंस्टेड ऑफ फेसिंग constant visa issues, living in a vibrant Indian culture, a good lifestyle with a high quality of life, and of course the experience of living in your homeland. So let's enjoy these. Remember the reason you wanted to move back. And this brings me to the last point why R2I bubble bursts, and that is expecting a red carpet welcome when you come back to India. Friends, R2I takes courage. To give up a comfortable lifestyle in a foreign land takes courage. To swim against the current takes courage. To plan and move back even when your friends or relatives and sometimes even your spouse and children are saying something different takes courage. और शायद इसी वजह से when we come back, अंदर से हमको लगता है that people around us will give us a warm welcome. पर सच ये है that after R2I, the majority of people you will meet के साथ ऐसा नहीं होगा. उल्टे sometimes return to India को लोग failure की तरह भी देखते हैं. But the fact is, when you moved from India to abroad, it was purely your decision. So when you are coming back also, it should be purely your decision. Do not expect that every decision you take, especially returning to India, will get a 100% approval rating, because it won't. कोई और क्या सोचता है इससे हमारी जिंदगी पे क्या ही फर्क पड़ता है. हो सकता है कि इसमें उनकी कोई गलती ना हो सकता है कि वो हमारे रीजंस समझते ना हो या समझना चाहते ना हो, लेकिन no one but we are responsible for our own lives. Friends, personally, I am proud of being able to return to India. ऐसा नहीं है कि मैंने इस ट्रांजिशन में कोई गलती नहीं की, बहुत सारी की. और शायद इसीलिए R2I प्लानिंग में रीजंस ऑफ फेलियर को समझना एंड अवॉइड करना इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. R2I मिस्टेक्स को अवॉइड करने के बारे में आपका क्या व्यू है? प्लीज डू शेयर इन द कमेंट्स बिलो. होप यू लाइक दिस वीडियो and will share it with your friends. Thank you. Namaste.